Hello everyone. Let us start with the next question. हमने कल क्वेश्चन नंबर 86 तक कर लिए थे. Let us start with 86. Ma'am, can you hear me? Write the first 5 square numbers. First 5 square numbers are 1 का square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. That is 1, 4, 9, 16 and 25. These are first 5 square numbers. Write cubes of first 3 multiples of 3. First 3 multiples of 3 are 3, 6 and 9. We want to write the cube of first 3 multiples. 3 cube 27, 6 cube is 216, 9 cube is 729. Show that 500 is not a perfect square. So prime factorization से factors find Can करेंगे. you hear me? Divisible by 2. Ma'am, can you hear me? 10, again 2, 5, 5 and 1. So 500 के factors आ गए हमारे पास. 2 into 2, 5 into 5 and 5. 1 5 is there which is not in pair. All the prime factors are not in pairs. Therefore, 500 is not a perfect square. Clear? Easy one. Let us move to the next. Express 81 as sum of first 9 consecutive odd numbers. Okay. So, starting with 1, odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 odd numbers. हमें formula पता है. Sum of first n odd natural number is n square. So 9 odd numbers are there and 81 is the square of 9. Using prime factorization, find which of the following are perfect squares. So factors find करेंगे सारे अपने अपनी notebook पे. 2 1s are 2 2s are 11, 11s are 121. So these factors are in pairs. So this will be a perfect square. So you can write all the factors are in pairs. Therefore 484 जो भी आएंगे मैं सबके लिए लिख देती हूँ आर परफेक्ट स्क्वायर्स. सभी पार्ट्स का चेक करके नेक्स्ट चेक करेंगे. 11250. आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना, आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखोगे. एक बता रही हूँ 484 2 into 2 11 into 11. यहाँ पे पेयर शो करोगे. देन राइट all the factors are in pairs. Therefore 484 is a perfect square. So next is last digit is 0, divisible by 2. 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 9s are 45, 3 3s are 9. So let us check the factor. 3 is in pair, 5 is in pair, but there is 1 2 which is not in pair. So 11250 is not a perfect square. Reason लिखेंगे, all the factors are not in pairs, therefore it is not a perfect square. Next number is 841. Okay, 841 के factors बनाएंगे. 841 is the square of 29. अब हम देखो लास्ट डिजिट 1 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है. सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखें तो डिविजिबल नहीं है. अब इसका यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस इज 1. वो तभी आएगा जब लास्ट डिजिट 9 होगा. तो 19 का स्क्वायर चेक कर लो, उसका नहीं है. 29 का चेक कर लो. सो इट इज द स्क्वायर ऑफ 29. तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो.
ठीक है, so all the factors are in pair, therefore it is a perfect square. Next is 729 divisible by 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 8s are 21, 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So this is pair of 2. This is again a pair and it is also a pair. So this is a perfect square. Reason will be same. All the prime factors are in pairs, therefore it is a perfect square. Next, using prime factorization, which are the perfect cubes? Okay, सबसे पहले factors find कर लेते हैं सभी के. 128, 2 6 are 12, 2 4s are 32, 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, and 2 1s are. Next, 343, 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are 49. 729 अभी हमने फाइंड किए थे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी. 3 2s are 6, 3 4s are, 3 8s are 21, 3 27, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. Last 1331, this is cube of 11. Okay, so now let us check the factors. Cube का है तो all the factors should be in triplet. 3 3 का बनेगा group 1 2. 1 2 is left here, so this is not a perfect cube. 3 का pair complete हो रहा है, so 343 is a perfect cube. एक group और दूसरा group, so this is again a perfect cube. And this is also a perfect cube. Reason लिखेंगे, all the prime factors are in triplets. जिसका ट्रिपलेट्स में है वो परफेक्ट क्यूब है और जिसमें नहीं है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्लियर? Using distributive law, find the square of 101 square. We want to apply distributive law here. Distributive law क्या होता है? A into B plus C. This is the distributive law. A into B plus C, that is equals to AB plus AC. So by applying this law, we will have to solve 101 multiply 100 plus 101 multiply 1. Distributive law apply कर दिया हमने. 10100 plus 101 add करेंगे 10201. Similarly, for the B part, 72 square, 72 into 72, एक 72 को हमने split कर दिया 70 plus 2. So apply the law here. 72 into 70 plus 72 into 2. 0, 2 7s are 14, 49 and 1 50. Add करेंगे 4, 4 plus 4 8. So 72 square is 5184. Next one. Can a right triangle with the side 6, 10 and 8 centimeter be formed? Right triangle इन side से तब बन सकता है if the sum of square of two smaller sides, sum of square of two smaller sides is equal to square of longer side. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वी कैन मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो छोटी साइड है 6 and 8. 6 square is 36, 8 square is 64, that is 100, which is square of 10, which is the longer side. So yes, we can make the right angle triangle with these sides. ठीक है, तो yes, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square आ गया हमारे पास.
Next is write the Pythagorean triplet whose one member is 4. We have members of Pythagorean triplet 2m, m square minus 1, m square plus 1. Let's see विराज. Okay. तो हमें इन तीनों में से किसी एक के इक्वल 4 को ऐसे रखना है कि जो m की वैल्यू होल नंबर आए, क्योंकि इन दोनों में तो स्क्वायर है तो कैंसिल नहीं होगा. जैसे अगर मैंने m स्क्वायर माइनस 1 को 4 के इक्वल रखा, 4 प्लस 1 5. 5 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो ये इसका मेंबर ये वाला तो नहीं होगा. तो हमने 2m को 4 के इक्वल रखा, यहाँ पे m आ गया 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m. 4 minus 1 3, 4 plus 1 that is 5. So members of Pythagorean triplet are 2, 3 and 5. Sorry, 3, 4 and 5. Members are 3, 4 and 5. This is 3. This member 2m is 4 and this is 5. Let's move to the next one. Using prime factorization, find the square roots. Prime factorization method से find करना है. Okay. 11025. Last digit is 5, divisible by 5. 5 2s are 10. 5 2s are 10. दो digit एक साथ उतारे तो 0. 5 5s are 25. 5 4s are 20. 5 4s are 20. 4 41. 3 से divisible होगा. Sum of the digits is 9, which is divisible by 3. 3 1s are 3. 3 4s are 12. 3 7s are 21. Again, sum of digits is divisible by 3. 3 4s are 12. 27. 3 9s are 27. 7 7s are 41. So 11025 is equals to 5 into 5, 3 into 3, 7 into 7. We want to find the square root. So दोनों तरफ हम square root का sign लगा देते हैं. Make the pairs. So square root will be 5 into 3 into 7. 15 into 7. 105. Now B part is 4761. चेक कीजिए 4761 किस पे जाएगा. Last digit is 1. Sum of the digits check करो. 7 7 14 plus 4 18. 3 से divisible होगा. 3 1s are 3. 3 5s are 15. 26. 3 8s are 24. 3 7s are 21. 6 14 7 21. Sum of digits is again divisible by 3. 3 5s are 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 9s are 27. 529, we know it is the square of 23. So 4761 square root, that is equals to 3 into 3, 23 into 23. So square root will be 3 into 23. 3 3s are 9. 3 2s are 6. So it is the square of 69. Next one. Using prime factorization, find the cube roots. Very easy. 512 divisible by 2. 2 2s are 4. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 8s are 16. 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 32. 16. 8. 2 4s are 8. 2 2s are 4. 2 1s are 2. Now we want to find the cube root. So sign लगाएंगे cube root का. Write the factors. 2 into 2 into 2. This is one triplet. Second triplet is there and third. 3 triplets are there. अगर आप यहाँ पे साइड पे ऐसे बना लेते हो तो आपको लिखते वक्त गलती नहीं होगी कि आपने कम या ज्यादा लिख दिया. 3 triplets, 3 groups. So 2 into 2 into 2. So cube root of 512 is 8. Next is 2197. Divisible by 3. 3 7s are 21. No, 3 से divisible नहीं हो रहा है. Okay.
2197 हमें पता है कि 13 का क्यूब होता है, तो हमें कम से कम 20 तक तो सबके याद होने चाहिए। 13 1s are 13, so 169, 13 are 169, so cube root of 2197 is 13, so cube root is 13. Let's move to next one. If 176 a perfect square, पहले चेक करते हैं कि है या नहीं है। 176, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 44, 22, 2 11s are. So perfect square होने के लिए all the factors should be in pairs. 176 is 2 into 2, 2 into 2, 11. So सबसे पहले पूछा है is this a perfect square? So write down all the factors are not in pairs. All the factors are not in pairs. Therefore, 176 is not a perfect square. Now next आगे क्या कहा है? If not, find the smallest number by which it should be multiplied. Okay. Smallest number by which it should be multiplied that is 11, क्योंकि 11 is not in pair. ठीक है, तो हमें बस यही लिखना था कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है। रीजन भी लिख देंगे बिकॉज 11 इज नॉट इन पेयर, बिकॉज 11 इज नॉट इन पेयर। नेक्स्ट, is 9720 a perfect cube? Okay, find the factors. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 21, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 3 8s are 21, sorry 24, 27, 3 9s are, 3 3s are, and 1. Let us check the triplets. 2 is in triplet, 1 3 is in triplet, 5 and 2 3. So all the factors are not in triplets. Therefore 9720 is not a perfect cube. If not, find the smallest number by which it should be divided. Okay. Smallest number by which it should be divided to get perfect cube. जो भी ज्यादा फैक्टर हैं जो ट्रिपलेट्स में नहीं है उससे डिवाइड कर देंगे। इज 2 3 एक्स्ट्रा है और एक 5 एक्स्ट्रा है, सो 3 3s are 9, 5s are 45. तो 45 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट वन, राइट two Pythagorean triplets each having one of the member as 5. Okay, so अगर मैंने बताया था odd, 5 is the odd number, तो other member of Pythagorean triplet is a square minus 1 by 2, 5 square minus 1, 25 minus 1, 24 by 2, that is 12, and the third member will be b plus 1, 12 plus 1, 13. So members are 5,
12 and 13. This is one Pythagorean triplet. We want to write 2. So another way to find the Pythagorean triplet whose members are m square minus 1, m square plus 1 and 2m. 2m को 5 के equal रखूंगी तो I will not get a whole number. So let's keep it equal to m square plus 1. Now 5 minus 1 is 4, so we get m as 2. So 2m is 2 into 2, that is 4. And the last member is m square minus 1, 2 square minus 1, that is 3. So members are 4, 3 and 5. 3, 4 and 5. तो दो पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करने दे जिनमें एक मेंबर 5 होना चाहिए. So 5, 12, 13, 3, 4 and 5. These are two triplets. Next one. Okay. By what smallest number 216 be divided so that the quotient is a perfect square? Okay. Write the factors of 216. 2 ones are, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are, 2 2s are, 2 7s are, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So 216 is equals to 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. So all the factors are not in pairs, so it is not a perfect square. अब हमें पूछा है कि किससे डिवाइड करें. All the factors are not in pairs, so 216 is not a perfect square. अब पूछा है number, smallest number by which it should be divided. Smallest number by which it should be divided to make a perfect square is एक 2 एक्स्ट्रा है और एक 3 एक्स्ट्रा है. So 2 into 3, 6. So आगे भी पूछा है also find the square root of quotient. 206 को 6 से डिवाइड किया तो quotient आया 36. Now we have to find the square root of 36. 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So square root of 36 is 6. Clearly जब दो factors 2 and 3 हट गए तो दो ही बचा, एक 2 का पेयर एक 3 का पेयर. So answer will be 6. Next one. By what smaller number 3600 be multiplied so that quotient is a perfect cube? Okay, find the factors of 3600. 2 18s are 36, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 3 30, 3 10, 2 5. So write all the factors. 3600 is 2 into 2 into t2. क्यूब रूट की बात हो रही है यहाँ पे, 3 3 के पेयर बनेंगे. 5 आ रहा है हमारा 2 बार. ओके. और then 2 times 3 and 1 times 2. So this is not a perfect cube. All the factors are not in triplets. So write down. All prime factors are not in triplets. Therefore, it is not a perfect cube. अब हमें पूछे कि किससे मल्टीप्लाई करें. Smallest number by which it should be multiplied.
अब हमें ट्रिपलेट कंप्लीट करने हैं। 5 देखो 2 बार है तो एक बार तो हमें 5 और चाहिए, तो 5। 3 2 बार है, एक बार और चाहिए। 2 एक ही बार है तो 2 बार 2 और चाहिए ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए। 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ क्वोशिएंट। मल्टीप्लाई किया 36 6 are 216। इसके बाद इसका क्यूब रूट भी फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 216,000। 216 is cube of 6, so I can write the factors directly। 2 और 3 6 और 10 आया 2 into 5। प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे लिखने हैं तो cube root is 2 into 3 into 2 into 5। 6 2s are 12, 5s are 60। नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। जिस मेथड से कहा उसी से फाइंड करना है। नंबर इज 1369। सबसे पहला काम पीछे से दो दो के पेयर्स बनाइए। 13 4 square is 16, so 3 square will be 9। 13 minus 9 is 4। तो यहाँ पे नंबर है उसका डबल। 3 2s are 6। अब मुझे चाहिए 9। या तो यहाँ पे इस प्लेस पे 3 आएगा या 7 आएगा। अगर मैं 3 देखूं 6 3s are 18, छोटा नंबर आ रहा है। 7 से चेक करेंगे। 7 6 are 42 plus 4 46, तो कंप्लीटली चला गया। सो 37। दिस इज 469। So square root of 1369 is 37. Now let us move to the next B part. 5 6 2 5. Make the pairs. दो दो का पेयर बनाएंगे राइट से। Now 56 7 7s are 49, 8 8s are 64। बड़ा हो जाएगा तो 7 पे गया। 16 minus 9 7 25। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। नाउ अब लास्ट डिजिट इज 5। कब आएगा? जब यहाँ पे 5 हो। चेक कर लेते हैं। 5 5s are 25, 20 and 2, 5 1s are 5 and 2। So yes 75। So square root of 5 6 2 5 is 75। Next one. Find the square root by long division again. Number is 27.04। राइट से पेयर बनाए। Now 4 4s are 16, 5 5s are 25। Okay. 27 minus 5 2। Then decimal is here. Decimal ऊपर चला जाएगा इसी पोजीशन पे। नेक्स्ट पेयर उतारा 0 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। अब 10 के पीछे यहाँ और यहाँ, और मुझे चाहिए 4। 4 कैसे आ सकता है? 2 2s are 4 या 8 8s are 64। तो 2 से चेक किया 102। So 204। So square root of 27.04 is 5.2। Next is 1.44। 1 1s are 1। 0 डेसिमल की जगह पे डेसिमल 44। नेक्स्ट पेयर उतारा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 2s are 44। So square root of 1.44 is 1.2। Clear to everyone? Let us move to next. What is the least number that should be subtracted, okay, to get a perfect square? So 1385 का long division से square root find कीजिए। 4 4s are 16, so 3 3s are 9। 13 minus 9 is 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब यहाँ पे है 5, तो या तो 5 पे जाएगा। अगर 5 पे छोटा है तो हम आगे भी लेके जा सकते हैं।
325 6 से चेक कर लो, 6 6 are 36 प्लस 3 39। अभी और आगे जा सकते हैं। 7 7 are 7 6 are 42 प्लस 4 469। तो 7 पे चला गया 469। 15 minus 9 is 6, 7 minus 6 is 1। जब सब्ट्रैक्शन का केस है तो जहां तक जाता है हमने किया। नाउ दिस इज द रिमाइंडर, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस रिमाइंडर फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 15 minus 6, 7 minus 6, so 1369। Therefore, we should subtract 16 from 1385 to make it a perfect square. Now आगे कुछ और का है। Also find the square root of perfect square. तो perfect square आया 1369, square root अब easily find हो जाएगा, 37 ही आएगा। 3 3s are 9, 469, so 67. So square root of 1369 is 37. Clear to all of you? Is there any doubt till now? Okay, no doubt.